42 বছৰীয়া হ'ল বিজেপি। 6 এপ্ৰিল 1980 ভাৰতীয় ৰাজনীতিত আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ। দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দলটোৱে সম্পূৰ্ণ কৰিলে 42 বছৰ। বুধবাৰে 42 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেৰে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ সময়ত বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি। দেশৰ প্ৰতিগৰাকী বিজেপি কাৰ্যকৰ্তালৈ শুভেচ্ছা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ, কচ্ছৰ পৰা কোহিমালৈ এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ আদৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰিছে বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তা দেশৰ সপোনৰ প্ৰতিনিধি। আজি দেশৰ নিজস্ব নীতি আছে। আমি আজি আমাৰ লক্ষ্যৰ দিশলৈ আগবাঢ়িব পাৰিছো। आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। आपने भी देखा है, कुछ समय पहले ही देश ने $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के उत्पादों के एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा किया है। বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলক সম্বোধন কৰি পৰোক্ষভাৱে বিৰোধীকো সমালোচনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দেশত এতিয়া দুই ধৰণৰ ৰাজনীতি চলি আছে, পৰিয়াল ভক্তি আৰু দেশভক্তি। দেশৰ একাংশ ৰাজনৈতিক দলে পৰিয়ালৰ হিতৰ বাবে কাম কৰি আছে। পৰিয়ালতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে বিজেপিয়ে। कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। দশক দশক ধৰি একাংশই ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰি আহিছে। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को ना सिर्फ टक्कर दी है, बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही। মোদীৰ সম্বোধনত ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ প্ৰসংগ। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বত দুটা ভাগত বিভক্ত। ভাৰত এতিয়াও নিৰপেক্ষ। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। তিনিটা দিশৰ পৰা বিশেষ এইবাৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। साथियों, इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर। इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले
4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। উল্লেখ্য প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দলটোৱে হাতত লৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপি দলে উলিয়ালে শোভাযাত্ৰা। হাতে হাতে দলীয় পতাকা লৈ বিজেপি দলৰ সকলো পৰ্যায়ৰ কৰ্মকৰ্তাই অংশ লয় এই শোভাযাত্ৰাত। দিল্লীৰ কাৰোলবাগত শোভাযাত্ৰাত অংশ ল'লে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই। নেশ্যনেল ডেস্ক, ঈশান নিউজ।